Good morning, Seven. Welcome back to your biology classroom once again. Today I will discuss respiration and photosynthesis. Hope all of you watched the last video. So let's start. Look at your book. In animals, there is only one kind of exchange of gases. Oxygen is taken in and carbon dioxide is given out. But it is not so in plants. The exchange of oxygen and carbon dioxide in plants takes place by two processes, photosynthesis and respiration. Both photosynthesis and cellular respiration are biochemical process. For what? In the meantime of, because these two processes happen inside the body. That's why it is a biological process. As well as in this both two process, new product are formed. That's why these are called biochemical process. The process of photosynthesis takes place during the day. During photosynthesis, carbon dioxide is taken in and oxygen is given out and glucose is formed. A part of this oxygen given out as a result of photosynthesis is used by the plants for respiration. So normally जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है उसी का एक कुछ पार्ट ऑक्सीजन इनटेक हो रहा है फॉर द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. In photosynthesis, no energy in the form of ATP is produced. So by the photosynthesis process, no energy is produced, whereas the cellular respiration produce energy. On the other hand, respiration takes place both during day and night. During respiration, oxygen is used by the cell and carbon dioxide is given out. Energy is released in the form of ATP. The carbon dioxide given out as a result of respiration is used up by the plants for photosynthesis. So actually, what is the meaning of that? So in case of photosynthesis, oxygen is produced, whereas in case of cellular respiration, again oxygen is used and release carbon dioxide with energy. The carbon dioxide given out as a result of respiration is used up by the plants for photosynthesis. So normally जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है वही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा यूज हो रहा है फॉर फोटोसिंथेसिस, बट ड्यूरिंग द डे ओनली, सिर्फ दिनों के टाइम. बट एट नाइट, सिंस नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, the carbon dioxide released as a result of respiration is given out through the stomata into the air. So रातों के टाइम नॉर्मली पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. इस दौरान हम लोग क्या बोलते हैं, रातों में पेड़ में हाथ देना ठीक नहीं है. Photosynthesis occurs in the chloroplast in green leaves and green stem. Respiration on the other hand takes place in the mitochondria. इसके नीचे दाग लगाना. फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रानास्टोमा में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है. ऑन द रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा, lenticel as well as the general surface of the root. So respiration, I mean the exchange of gases, takes place through stomata, lenticel and the outer surface of the root. The difference between photosynthesis and respiration. Food is synthesized by the plants using carbon dioxide and water. Next, respiration क्या होता है? Food is oxidized using oxygen to release energy. So in case of that photosynthesis, food is synthesized, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है. Whereas in case of respiration, food is demolyzed, मतलब इसको तोड़ के ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, उसी के साथ एनर्जी फॉर्म होता है. It takes place only in autotrophs, and in case of respiration, it takes place in both autotrophs and heterotrophs. Next, it takes place only in the cells of green plants that have chloroplast. मतलब जो plant possess chloroplast, they are able to do photosynthesis. But it takes place in the mitochondria of all the cells of plants. मतलब plants का हर सेल में mitochondria होने पे cellular respiration takes place. Next, photosynthesis takes place only during the daytime, but
Respiration takes place throughout day and night. Photosynthesis requires carbon dioxide and water, whereas in case of respiration, carbon dioxide and water vapor are the byproducts. It requires glucose and oxygen. Oxygen is released as a byproduct and carbon dioxide and water are released as a byproduct. It captures energy and stored it in sugar. So in case of photosynthesis, green plants trap the solar energy and store it as sugar. But in case of respiration, it releases the energy stored in sugar. So it is the basic difference between photosynthesis and respiration. So student, you will learn the difference very carefully because from it I will give some MCQ type of question. Now here is an activity. First aim क्या है? To show that carbon dioxide is released by plants during respiration. So through an experiment we will show that carbon dioxide gas is released by the plants during respiration. Materials required: 2 conical flasks, lime water, 2 beakers, 2 glass tubes, rubber cork and carbolic acid. Then what is the procedure? Take few soaked grams. Soaked means already वो पानी में भिगा चुका है. Take a few soaked grams, seed in a conical flask and mark it as a flask. Just look at it. Soaked grams लेने के बाद हम दाग लगा दिए conical flask में. Take an equal number of boiled gram seeds in another flask and mark it as flask B. Another flask में हम लोग यहाँ पे soaked लिए, वहाँ पे boiled seed लेके दाग लगा दिए. Add some carbolic acid to the seeds in order to prevent their decay. यहाँ दोनों कंटेनर में हम लोग कार्बोलिक एसिड ऐड कर दिए, जहाँ पे नॉर्मली कुछ सीड्स का कोई मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कोई डैमेज ना हो. Tightly close the flask using a rubber cork. Insert one end of the glass tube in a flask. Both conical flasks में देखो हम लोग कॉर्क दे के बंद करने के बाद एक ग्लास ट्यूब के द्वारा मतलब दूसरा बीकार में उसको हम ऐड कर दिए. Next, insert one end of the glass tube in a flask A and another end in the beaker containing lime water as shown in figure 6.7. So already जो बीकर में हम लोग उसको ग्लास ट्यूब के द्वारा ऐड किए, दोनों बीकर में क्या रखा है? लाइम वाटर. Leave both the setup undisturbed for at least 2 hours. तो both setup को हम लोग विदाउट डिस्टर्ब किए हुए 2 आवर्स के लिए ऐसे खुला छोड़ दिए. What change do you observe in the both beakers? तुम लोग क्या चेंज नोटिस करोगे? ऑब्जर्वेशन, लाइम वाटर इन बीकर ए टर्न्स मिल्की. बीकर ए में लाइम वाटर जो है that turn into milky. The color of lime water does not change in beaker B, but beaker B में lime water का कोई color change नहीं हुआ. So conclusion, it shows that germinating seeds produce dash during respiration. So इसके द्वारा हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं? Germinating seeds normally produce carbon dioxide. That's why carbon dioxide turned the lime water का कलर चेंज कर दिया. नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. एनिमल टेक इन ऑक्सीजन थ्रू लंग्स, बट रेस्पिरेशन इन plants take in oxygen through stomata, lenticel and the general surface of the roots. So basically we intake, animals takes oxygen through our nose. Same way, plant takes oxygen through their stomata, lenticel and the general surface of roots. Next, respiration in animals. Carbon dioxide is released as a byproduct and the process and is not taken back. कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और दोबारा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये प्रोसेस को ओरिजिनल स्टेप में वापस नहीं लेके आ सकते.
Same way, respiration in plants, carbon dioxide is released as a byproduct in the process and it reabsorbed for photosynthesis. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, रिलीज होता है और अगेन इट इज रीएब्जॉर्ब्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए रीएब्जॉर्ब भी होता है. नेक्स्ट, द फूड एंड ऑक्सीजन यूज फॉर रेस्पिरेशन आर टेकन आउटसाइड. मतलब रेस्पिरेशन के लिए नॉर्मली हम लोग जो ऑक्सीजन और फूड की जरूरत होता है वो हम आउटसाइड से गेन करते हैं. बट इन केस ऑफ प्लांट्स, द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन यूज फॉर रेस्पिरेशन आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट देमसेल्फ. बट प्लांट्स तो खुद ब खुद ही खाना बनाता है, इसीलिए नॉर्मली रेस्पिरेशन के लिए जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जरूरत है वो खुद प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज वेरी वास्ट, बट इन केस ऑफ प्लांट्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लो. द लास्ट पॉइंट इज वेरी important. In case of respiration of animals, the process is very fast process. But in case of plants, the respiration process is slow process. So student, hope all of you understood what I've discussed in this video. In the next class, I will discuss the exercise. So for today, up to this portion.